हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स पढ़ते हैं इंग्लिश के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स है जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो पहला जो ईडियम है ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज, इसका मतलब होता है सीम्स बैड बट इज़ एक्चुअली गुड। तो एग्जांपल है सेंटेंस इसका कि एक्सीडेंटली रजिस्टरिंग फॉर द रॉन्ग क्लास वाज एक्चुअली ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो पहला जो है ब्लेसिंग इन डिसगाइज सीम्स बैड बट इज़ एक्चुअली गुड, जो लगता है बैड बट एक्चुअली में वो गुड, वो अच्छा होता है। तो दूसरा है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, इसका मतलब होता है एक्शंस आर मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्ड्स। तो एग्जांपल है यू से यू लव मी बट एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। फिर है इसके बाद है ए पीस ऑफ केक मीन्स ईजी, जो भी कोई ईजी कुछ भी होता है, टास्क होता है, जो भी कोई काम है ईजी है। ए पीस ऑफ केक इट मीन्स कि द टेस्ट वाज ए पीस ऑफ केक। टेस्ट वाज ए पीस ऑफ केक मीन्स टेस्ट वाज ईजी, ए पीस ऑफ केक। बीटिंग अराउंड द बुश, बीटिंग अराउंड द बुश मीन्स होता है नॉट डिस्कसिंग व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। प्रोक्रास्टिनेटिंग, प्रोक्रास्टिनेटिंग मीन्स डिले करना। तो नॉट डिस्कसिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मुद्दे की बात नहीं करना। बीटिंग अराउंड द बुश, तो इसका जो इसकी एग्जांपल जो है सेंटेंस में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इसको सेंटेंस में, आई नीडेड टू स्टडी बट आई केप्ट बीटिंग अराउंड द बुश। तो इसके बाद है बिग टास्क ऑन योर हैंड, बिग टास्क ऑन योर हैंड। बिग टास्क ऑन योर हैंड मीन्स हैविंग समथिंग इंपॉर्टेंट टू फिनिश, हैविंग समथिंग इंपॉर्टेंट टू फिनिश। तो कुछ इंपॉर्टेंट होना फिनिश करने के लिए बिग टास्क ऑन योर हैंड। माई टीचर गेव मी ए न्यू टास्क सो आई हैव ए बिग टास्क ऑन माई हैंड। तो इसके बाद है ब्रेक ए लेग। ब्रेक ए लेग मीन्स होता है विशिंग समवन टू डू वेल, किसी को विश करना टू डू वेल या गुड लक। तो ब्रेक ए लेग, यू विल डू फाइन ऑन योर प्रेजेंटेशन, गो ब्रेक ए लेग आउट देयर। यू विल डू फाइन ऑन योर प्रेजेंटेशन, गो ब्रेक ए लेग आउट देयर। इसके बाद है इडियम कैन नॉट स्टैंड समथिंग, टू मीनिंग होता है इसका टू डिसलाइक समथिंग। आई कैन नॉट स्टैंड हैविंग टू डू होमवर्क ऑन ए संडे। एंड check out that means होता है give that a look, check out that very cool looking car, check out that very cool looking car means check out that means give that a look। close but no cigar, close but no cigar मतलब होता है close but failed at the end, close but you got 79% on the test, almost a b close but no cigar, close but failed at the end, close but no cigar। don't sweat it, डोंट स्वेट इट मीन्स होता है डोंट वरी अबाउट इट, फिक्र ना करना। तो यू एक्सीडेंटली स्क्रैचड माई कार बट आई डोंट केयर, डोंट स्वेट इट। ड्राइविंग मी बनानाज होता है मेकिंग मी फील क्रेजी, माई वेरी लाउड नेबर्स आर ड्राइविंग मी बनानाज। तो मेकिंग मी फील क्रेजी। ईजियर सेड देन डन, ईजियर सेड देन डन होता है ईजी टू से बट हार्ड टू एक्चुअली डू। तो चेंजिंग द वर्ल्ड easier said than done, तो easier said than done होता है easy to say but hard to do। तो changing the world is easier said than done। get out of town, I don't believe you, you got an A in your finance class, get out of the town। फिर get over it होता है forget about the past, he broke up with his girlfriend but he needed to get over it। फिर gone off track, forget about your future goals, gone off track होता है forget about your future goals। तो माई फ्रेंड रियली गॉट ऑफ ट्रैक बिकॉज ही फेल्ड 3 क्लासेस दिस सेमिस्टर। हैंड्स डाउन मीन्स होता है फॉर सर्टन द राइट आंसर, कि अमेरिका इज हैंड्स डाउन द बेस्ट प्लेस टू स्टडी अब्रॉड। तो फॉर सर्टन द राइट आंसर हैंड्स डाउन। हैंग ऑन ए सेकेंड, वेट फॉर ए मोमेंट, हैंग ऑन ए सेकेंड आई एम वेटिंग फॉर माई लॉन्ड्री टू फिनिश। हैंग आउट, स्पेंड टाइम विद ए फ्रेंड, हैंग आउट, जो एंड आई हैंग आउट आफ्टर क्लास एवरी वीक। हैव स्टम्बल्ड अपॉन, to accidentally discover something, have stumbled upon होता है to accidentally discover something। I stumbled upon a new restaurant while walking around downtown। hold your horses means होता है wait करना, calm down, wait या calm down। hold your horses, I am still eating my lunch। how is it going, how are you, it means how is it going मतलब होता है it means कि how are you, how is it going today Bobby। तो I made a key decision, make an important decision, I made a key decision मतलब made an important decision, I made a key decision to finish college। inside scoop होता है the details, have give me the inside scoop on how you met John। तो details देना। in the bag
मीन्स होता है will definitely happen. My baseball team will win the game. It is in the bag. I was knocked on my heels. I was surprised. Knocked on my heels means surprised. So I was knocked on my heels when I realized I got the job. फिर I will toss it around. Toss it around क्या होता है? I will toss it around to casually suggest an idea to people. I am tossing around the idea of having party this weekend. I am feeling blue. I am feeling blue means होता है to feel sad. Sad feel करना. I failed my test today. I am really feeling blue. I am out. I am out means होता है I am leaving. I have to go to a meeting. I am out. In the nick of time. In the nick of time होता है when something happens at the last possible moment. Last possible moment पे होना. When something happens at the last possible moment. In the nick of time. The firefighter saved the baby from the burning building in the nick of time. यानी कि it means कि at the last possible moment. The firefighter saved the baby. It is all flooding back to me. It is all flooding back to me, meaning beginning to remember something you once forgot. When I saw my childhood bicycle memories, all came flooding back to me. Kick the bucket. Kick the bucket होता है to die, no longer work. To die या no longer work. It means kick the bucket. इसकी example है yesterday my phone kicked the bucket. Laid back means होना means relaxed होना. Jason is not very excited. He is laid back. तो Jason is not very excited. He is laid back. He is relaxed. Lost shot means the lost chance. The final exam is my last shot to get A in the class. Leading someone on means होता है having someone believe something that is not true. Why do you keep telling Amy you like her? You are just leading her on. Leading someone on होता है having someone believe something that is not true. Lend a hand मतलब means होता है help someone out. I see those grocery bags are very heavy. Can I lend you a hand? Help someone out. Lend a hand. Let it ride होता है to allow something to remain as it is. I don't like my schedule for next semester, but I am going to let it ride. तो let it ride मतलब होता है to allow something to remain as it is. Let's boogie on out. Let's boogie on out होता है let's all leave together. Let's boogie on out. The bar is closing. Let's boogie on out. तो boogie on out होता है let's all leave together. इसके बाद है let's bounce. Let's bounce means होता है to leave. तो it means कि the football game is over. Let's bounce. तो football game is over. Let's leave. तो bounce का मतलब होता है let's bounce. Let's leave. Low down means होता है to receive the full story. तो to receive the full story. Low down. Hey, give me the lowdown on what happened last Saturday night. Give me the full story. To receive the full story. Hit the books means होता है to study करना. I cannot go to the party tonight. I have to hit the books means I have to hit the books means I have to study. To touch the base means to contact someone. किसी को contact करना. To contact someone. Touch the base. I need to touch base with Jeremy about the new office reports. To touch the base. यानी कि I need to touch the base means I need to contact with Jeremy. Locked in. To give full concentration to. I am really locked in to this new television series. To give full concentration. No big deal. No need to worry. No big deal होता है no need to worry. If you cannot make it to my birthday dinner, it is no big deal. Means कि it is no need to worry. Get on the ball. Get on the ball होता है to get focused on the goal. To get focused on the goal. If you haven't started your research project yet, you need to get on the ball. It means you need to get on the ball means you need to be focused. Out of nowhere, unexpected. The surprise quiz came out of nowhere. The surprise quiz came unexpectedly. So out of nowhere, unexpected. Out of blue, unexpected. Out of blue भी होता है unexpected. We were talking to the store where Mike appeared out of the blue. यानी कि Mike appeared unexpectedly. Pull the plug to end something या someone. After Bob quit, we must just have to pull the plug on the whole operation. तो pull the plug means होता है to end something या someone. We must have to have the pull the plug on the whole operation. Put a sock in it. Be quiet. So my loud neighbors really need to put a sock in it. Put a sock in it means be quiet. My loud neighbors really needs to be quiet. यानी कि need to put a sock in it. Rally the troops होता है to gather friends together. We are going to rally the troops. We are going to gather together then head to the basketball game. Means कि we are going to rally the troops. तो इसका मतलब होता है rally the troops to gather friends together. Since day one, for a long time, we have been playing football since day one. यानी कि since for a long time. तो ये थे important idioms. तो I hope you like this. Please subscribe this channel and like. Thank you. All the best.